Hello, my dear students. Welcome to your GK class. How are you? I hope you all will be fine at your home. So, today we will study about chapter 6 Useful Plants. Okay, but before it, we will discuss about previous class homework. In previous class, I had given you to write 5 points about bonsai tree. Okay, so let's see. First, bonsai is a cultivated mini tree. As I taught you, bonsai is a cultivated mini tree. bonsai एक छोटा पौधा होता है जिसे हम कल्टिवेट करके उसको चेंज करके बड़े ट्री से छोटे ट्री के रूप में चेंज करके हम उसको बोनसाई फॉर्म देते हैं. ओके. सेकंड, इन जापानीज वर्ड बोनसाई मीन्स ट्री इन कंटेनर और ट्रे. ओके. थर्ड, बोनसाई वॉज बॉर्न इन चाइना thousands of years ago. Number 4, trimming, pruning, wiring, clamping and grafting are the techniques used for shaping and cultivating bonsai. Okay, किसी भी ट्री को बोनसाई ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ट्रिमिंग, प्रूनिंग, वायरिंग, क्लैंपिंग एंड ग्राफ्टिंग. ओके. फिफ्थ, the first World Bonsai Convention was held in Japan in April 1989. Okay. Next, the Bonsai Convention is held every 4 years at different places in the world. Next and last point is the Indian Bonsai Association was founded in March 1981 to promote bonsai in India. Okay. Now we will start our today class. So Tuesday, chapter 6 Useful Plants. Plants provide a lot of material that we use for various purposes. Write the name of 2 useful things that we get from the following plants. As we know, plants provide a lot of material. Mainly, plants provide us purified air, and we use air for respiration. As well as plants provide us foods, clothes and lot of material in form of fruits, in form of leaves, in form of roots, in form of trunks. Okay, so we receive lot of material from plants and tree. Whatever we need, we receive from plants. प्लांट से हमें ढेर सारे मटेरियल मिलते हैं. सबसे महत्वपूर्ण कि हमें शुद्ध वायु किससे मिलती है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है, जो हमारे रहने के लिए, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. उसके साथ ही हमें प्लांट से फूड, क्लोथ्स और भी बहुत सारी वस्तुएं हमें पौधों से प्राप्त होती हैं. सो देयर आर सम प्लांट्स एंड वी हैव टू राइट व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस प्लांट. सो नंबर फर्स्ट plant is jute. We get lot of material from jute also, but here we have to write only 2. So first is curtains. First is curtains and carpet. We
receive curtains and carpet from jute. From the using of jute plant, we make curtains and carpet. As you can see here, this is a curtain of jute plants. Okay, and this is carpet. This carpet is made from jute. Okay, and this curtain is also made from jute. Okay, number next, cotton. We get cloth from cotton. Okay, and when you get injury, so then you use bandage. So bandage is made from cotton. Okay, bandage means पट्टियाँ. बैंडेज मीन्स पट्टी. जब हमें किसी भी तरह का चोट लग जाता है तो हम उसके लिए पट्टी का यूज़ करते हैं ना. तो वो बैंडेज किससे बनी होती है? वो भी कॉटन से बनी होती है. ओके, नंबर थर्ड इज रबर. फ्रॉम रबर प्लांट वी रिसीव बेल्ट्स एंड शू सोल्स. फ्रॉम यूजिंग रबर trees we make belt and shoe soles. Okay, number 4, coconut. Number 4, coconut. From coconut husk, it means upper part of coconut or outer part of coconut, we get ropes. From using outer part of coconut we make ropes, and from shell of coconut we can make lot of craft material. Like you can see here, this craft material is made by coconut shell. Okay, and next is bamboo. So by bamboo we get furniture. In your houses lot of furniture, and that furniture are made by bamboo, and as well as we make house from bamboo. So you can see here, this house is made from bamboo. Okay, so you can see here, this is a very beautiful house, and this is made from bamboo. Next is neem. From using neem tree we make medicine. And insecticide. Insecticide means कीटनाशक. मीन्स हम कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए भी नीम ट्री के पत्तों का और उसकी जो हस्क होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं. ओके, सो these are two useful things that we get from this plant. Okay, now you have to write the name of two useful things that we get from the given plants. It is your SW. You have to write the name of two useful things that we get from the given plants. Okay.